Hello student, in this lecture we are going to discuss Know Your Customer. In short we call it KYC. KYC, it requires compliance by banks of two things. One, KYC guidelines issued by Reserve Bank under Section 35A Banking Regulation Act. Second, provisions of Prevention of Money Laundering Act PML Act. So जब हम कहते हैं KYC तो KYC में दो तरह का कंप्लायंस बैंकों को करना है, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस को और दूसरा PML एक्ट के प्रोविजंस को. Friends, KYC takes into account recommendations of Financial Action Task Force on anti-money laundering standards and combating financing of terrorism. So this task force is an international task force. What is objective of KYC? KYC को किस पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस किया गया? So the purpose here was to prevent use of banks for money laundering and for terrorism financing. बैंकों को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज ना किया जा सके और टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए यूज ना किया जा सके. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ KYC. नाउ व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? फ्रेंड्स, मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इलीगल मनी or money of crime to legitimate money through a complex chain of transactions. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एक कॉम्प्लेक्स चेन बनाकर इलीगल मनी या क्राइम के मनी को लेजिटिमेट मनी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग. नाउ इन इंडिया, हु इज द अथॉरिटी which tracks money laundering activities under PML Act? So ये अथॉरिटी है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU इंडिया, and this is working under Ministry of Finance. Now there are four important aspects of RBI policy on KYC. बैंकों के लिए जो RBI की KYC पॉलिसी है, RBI के जो KYC गाइडलाइंस हैं, उनमें चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. फर्स्ट एस्पेक्ट इज कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी. अगर कस्टमर को हमने एक्सेप्ट करना है, उसके साथ डीलिंग्स करनी है, तो उसके लिए हमारी पॉलिसी क्या होगी. सेकंड, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोविजन. कस्टमर को आइडेंटिफाई करने का प्रोविजन क्या है, प्रोसीजर क्या है. थर्ड, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. कस्टमर के अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको मॉनिटर करना. एंड नंबर फोर, risk management. So these are four important aspects, elements of RBI policy of KYC. Now first we shall discuss PML Act Requirements. Prevention of Money Laundering Act की क्या-क्या requirements हैं? First we shall discuss that one. There are certain obligations of banks under PML Act. So these obligations include, number one, to prepare record of large cash transactions. And जब हम कहते हैं large cash transactions, we mean to say above rupees 10 lakh. And these transactions can be of two types. One, single transaction of above rupees 10 lakh. Second, total of monthly transactions. And when we say total of monthly transactions, means more than one transactions which are less than rupees 10 lakh. So total of those transactions on a monthly basis. यहाँ पे डेबिट टोटल को अलग से देखना है
क्रेडिट टोटल को अलग से देखना है. So debit and credit total will be taken separate for the purpose of calculating 10 lakh. Second, preservation of records. So whatever records will be prepared like this. So these are to be preserved. And preservation time is record of transactions 5 years from date of transaction. And record of documents 5 years from date of cessation of the relationship. Means KYC के जो डॉक्यूमेंट हैं वो 5 साल तक हमें प्रिजर्व करने हैं अकाउंट बंद होने के बाद, cessation of relationship. So these records relate to transactions, these records relate to document, and period of 5 years in both the cases. Then third one is reporting cash transactions above rupees 10 lakh as CTR. So 10 लाख से ऊपर वाली जो भी transactions हैं इनको FIU को report करना. So that is third obligation. When we say CTR, cash transaction report, it is possible there are individual transactions जिनका अमाउंट 50,000 रुपए तक हो, वो इसमें आ जाती हैं. These are not to be reported separately, although these will be included in the total, but these will not be reported individually and separately. Now, what returns are submitted under PML Act? So FIU India को कौन-कौन सी रिटर्न सबमिट होनी है? First report is cash transaction report. So this report is a monthly report and it is to be submitted within 15 days from close of the month. Second transaction, suspicious transaction report STR. This report is to be submitted within 7 days and it is to be submitted from confirmation of suspicion. So जब भी कोई doubtful transaction है और वो confirm हो जाए, then within 7 days उसका reporting FIU India को करना है. Third is counterfeit currency report CCR. So this is to be submitted within 15 days from date of detection. So these are various reports, returns which are required to be submitted to FIU India. और ये बैंकों का obligation है under